Hey guys, welcome back to your very own YouTube channel Teaching Blog. In today's video, we are going to talk about the stages of growth and development. ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं and I will try to clear all your doubts. So without wasting any further time, let's get started. People go through many changes over their course of lives. Development refers to the growth of humans throughout their lifespan, from conception to death. Psychologists strive to understand and explain how and why people change in physical as well as emotional terms throughout their life. While many of these changes are normal and expected, they can still pose challenges and people sometimes need extra assistance to manage. And in order to generate better understanding of the course of human development, it is important to divide the development span in different stages. ऐसा करने से बहुत ईजी हो जाता है इस बात को पहचानना कि क्या क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, फ्रस्ट्रेशन या फिर लो अचीवमेंट वाली फीलिंग्स या डिफ़िकल्टीज किसी भी इंडिविजुअल के सामने आ सकती हैं. In order to generate better understanding of the course of human development, it is important to divide the development span in different stages. By doing so, it becomes easier to recognize the potential problems that may lead to difficulties in dealing with anxiety, depression, low self-esteem, frustration, and low achievement at any point of time. Developmental psychologists have divided the lifespan of an individual into 8 stages. The first is prenatal development. Second, infancy and toddlerhood. Third, early childhood. Fourth, middle childhood. Fifth, adolescence. Sixth, early adulthood. Seventh, middle adulthood. And eighth, late adulthood. So let us start studying about each stage in detail. सबसे पहले बात करते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट की. सो प्रीनेटल डेवलपमेंट एक वो स्टेज होती है डेवलपमेंट की जो स्टार्ट हो जाती है राइट आफ्टर द कंसेप्शन इनसाइड द मदर्स वूम. Majorly, it is influenced by the nature and the nurture. Nature here represents the genetics and nurture represents the environment. Evolutionary psychology along with the twin and adoption studies help us understand the interplay of factors and the relative influences of nature and nurture on human development. This stage, the prenatal stage, is studied to understand how the earliest influences on development can impact later growth and development during childhood. ये एक वो स्टेज है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जितने भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं किसी भी चाइल्ड को, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या मटर्नल ड्रग यूज़ की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है या इनहेरिट कोई डिसीज़ है, तो उन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन द कोर्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर स्टडीड बाय द साइकोलॉजिस्ट एट दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Let us move on to the second stage, which is early childhood. Now, in this stage, the child belongs to the 2 to 5 years of the age. ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस को डेवलप करता है और एक कीन सेंस ऑफ हियरिंग उसके पास होता है बट विजन उसका क्लियर नहीं होता. सो एक ऐसी स्टेज जहाँ पे चाइल्ड अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू अ वॉकिंग टॉकिंग टॉडलर विद इन अ रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है. In this stage, the primary interaction of the child is with the parents and of course with the immediate family members which act as primary caregivers. It is also the period from infancy through early childhood where the remarkable growth and development takes place. Developmental psychologist इस स्टेज पे ज़्यादातर फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल ग्रोथ को देखते हैं which takes place during this critical period of development. Talking about the further aspects of early childhood, parents and healthcare experts are often on the lookout to ensure that kids of this stage are growing properly and receiving adequate nutrition along with achieving the cognitive milestones appropriate for their age. This is the time of preschooling years also. ये वो टाइम होता है जहाँ पे बच्चे को हम किसी प्ले वे स्कूल में या प्री स्कूलिंग ईयर्स उसके शुरू हो जाते हैं. चिल्ड्रन इस स्टेज पे एक सेंस ऑफ सेल्फ और एक ग्रेटर इंडिपेंडेंस की फीलिंग
गेन करने लगते हैं, जिसकी वजह से दे ट्राई टू कंप्लीट देयर वर्क ऑन देयर ओन. The child in this stage is also very busy in learning new languages, especially the mother tongue. Let us see what middle childhood has to teach us. Now this is the stage when child belongs to the age group of 6 to 11 years. 6 से 11 साल का बच्चा middle childhood की कैटेगरी में आता है. इस स्टेज पे ब्रेन अपना मैक्सिमम साइज रीच कर जाता है somewhere around 7 and then it continues to develop. The children at this stage are able to refine their motor skills. Children also begin to learn about social relationships, which is a very important concept for a social development of the child, and this is what starts in the middle childhood stage. Now what happens is यहाँ पे social relationships beyond family जाते हैं through the interaction with the friends and fellow students. They start gaining competency through school homework and continue to build their unique sense of self. Now this period of development is marked by both physical maturation and the increased importance of social influences as children make their way through elementary school. यहाँ पे इस stage पे same sex friendships are particularly salient during this period. It hardly matters for the child whether he has made friendship with a girl or a boy. Opposite sex friendship or same sex friendships are particularly silent in this period. Talking about adolescence, this is a period in which the most dramatic physical changes and overall physical growth takes place along with the sexual maturity, which is known as puberty. It is generally said that the puberty is a little early in girls in comparison to boys. This may be because of the factors such as culture and environment. ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे बहुत हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रन में एंड दे स्टार्ट थिंकिंग and exploring about new possibilities. This is the stage where children also start gaining the understanding of the abstract concepts. Now what are abstract concepts? These are the concepts which are not physically visible, but they can be felt, they can be observed. They are related to the emotional aspects of an individual, such as love, fear and freedom. Now this is also the time when the teenagers are involved in establishing their own identity. अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने में वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि they are going to be the center of attraction wherever they go. So they become a kind of self-centered and they try and they strive to establish their own identity. Also, this is a time period where they typically struggle to become more independent from their parents as they strive for a sense of belongingness and acceptance. This is a stage when they want to become more independent, they want to take more decisions, they want to take the major and the important decisions of their life, and they don't want to most of them, they don't want to consult their parents as they want their parents to accept their decisions and have that sense of belongingness. Now friendships and social relationships, as we all know, becomes the priority at adolescence stage. We all have gone through this stage and we know how important the friendships and the social relations were for us during adolescence stage especially. Now this is a stage where mixed sex peer group becomes more common. Instead of focusing on the boy group or girl group, they start making the mixed sex peer group. Psychologists such as Erik Erikson were especially interested in looking at how navigating this period leads to identity formation. Now this is a period where the child which leads to the identity formation. जिस तरीके के thoughts, जिस तरीके के action या जिस तरीके के influences adolescence age पे होते हैं, उसी के basis पे identity formation होता है. A very famous psychologist, Erik Erikson, he was specially interested कि किस तरीके से इस स्टेज पे नेविगेट करने के बाद किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है. This is also the stage where new roles and responsibilities are explored. Now this is a stage जहाँ पे कोई भी बच्चा new possibilities या new roles को explore करता है. He or she becomes more sensitive towards the responsibilities that he or she has as the kids, whether it is related to the career or taking care of the family in the future. Now the teenage years, adolescence
स्टेज में जो बच्चे होते हैं, दे सिंस दे बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 11, समवेयर अराउंड 11 to 17 or 18 years, they are also called as teenagers. Now these teenage years are often the subject of considerable interest as children experience the psychological turmoil, social pressure and transition. See, मैंने आपको पहले ही बता दिया, this is a stage of dramatic physical growth and maturity. तो इसकी वजह से जब ये पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ फाइट एंड फ्लाइट स्टेज भी इसको कहते हैं, तो क्यों इसको हम फाइट एंड फ्लाइट स्टेज भी कहते हैं? बिकॉज दिस इज अ स्टेज वेयर द टीनेज ऑल्सो अंडरगोज साइकोलॉजिकल टर्मोइल बिकॉज ऑफ द प्यूबर्टी, बिकॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड द फिजिकल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस in his or her body. Also there is a social pressure to perform well in the studies. This is a time where students, previously up to because of the new education policy, the boards have been discarded, but they had that pressure, they always had that pressure of social pressure of performing good or having good grades in the academics. Now this is also the period where the transition is taking place. Transition in the sense of physical growth and maturity. So this is a fight and flight stage, I would say. Now at this stage, kids often test limits and explore new identities as they explore the question of who they are and who they want to be. Now this is the stage where most of the kids or most of the children, they undergo this question, they start questioning themselves that who they are and what they want to be in future. क्या है और क्या बनना चाहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस उनके माइंड में इस स्टेज पे आने लगते हैं. अर्ली एडल्टहुड की अगर हम बात करें तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पे कोई भी पर्सन अपने लेट 20s या 30s में होता है. ये एक ऐसा पीरियड होता है किसी भी पर्सन की लाइफ में जिसमें रिलेशनशिप्स को बनाना और उनको मेंटेन करना प्रायोरिटी होती है. इस स्टेज पे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, इंटीमेसी, क्लोज रिलेशनशिप्स एंड स्टार्टिंग अ फैमिली आर ऑफन द क्रिटिकल माइलस्टोन्स विच अ पर्सन अचीव्स at this stage. Love and work are the primary concerns of this stage. सब इससे ज़्यादा और कुछ important नहीं रहता. Those who can build and sustain such relationships which tend to experience connectedness and social support, they become satisfied. Otherwise, those who struggle with such relationships, they may feel, they may have the feeling of left out and maybe they start feeling lonely. Now this is a period where there is a high risk of getting involved in criminal activities and substance abuse. Since this is a stage where a person is at his or her psychological or physiological peak. It is also a time of focusing on the future and putting a lot of energy into making choices that will help one earn the status of full adult in the eyes of the other. Now this is a stage where they want to maintain a love and work life balance so that they can earn the status of a full adult, कि उनको लगे इन फ्यूचर में जाके कि हाँ हमने बहुत कुछ अच्छा कर लिया है अपनी लाइफ में. we have balanced out all the things, whether it is related to the personal life, whether it is related to the professional life. They want that satisfaction in the upcoming years of their life. So that is the reason why the people who are in the stage of early adulthood, they put in a lot of energy into making the choices. Now talking about middle adulthood. Now these are the individuals which belong to the age group of 40 to 60 years and they are in the middle stages of their life. ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे लाइफ का पूरा सेंटर इस बात पे चला जाता है कि क्या हमने अब तक जो किया, whether we have achieved enough, whether we have contributed to the society enough. Now Erikson described this as the conflict between generativity and stagnation. यहाँ पे इस स्टेज पे आने के बाद कोई भी इंडिविजुअल उस कंडीशन में नहीं होता कि वो कोई न्यू आइडियाज़ या न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ को अडॉप्ट करे, और ना इस स्टेज में होता है जो एकदम वहाँ पे वो स्टैग्नेंट होके बैठ जाए या अपनी लाइफ को एक फुल स्टॉप लगा दे या रोक दे. सो इसीलिए एरिक्सन ने डिस्क्राइब किया कि ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. ना तो कोई भी पर्सन इस स्टेज पे जो भी पर्सन है, ना तो वो पूरी तरह से क्रिएटिव हो पाता है और ना पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो पाता है. नाउ दोज हु एंगेज इन द वर्ल्ड, दे कंट्रीब्यूट थिंग्स दैट विल आउटलास्ट देम.
and leave a mark on the next generation, which emerge with a sense of purpose. ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो पर्सन है he or she wants to contribute टू द सोसाइटी, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो चाहता है कि वो एक मार्क छोड़ जाए नेक्स्ट जनरेशन पे, और वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है वो उनको मिडिल एडल्टहुड वाली स्टेज पे कम्प्लीटली आ जाए। अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे कि करियर, फैमिली, ग्रुप मेंबरशिप और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आर ऑल द थिंग्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू दिस फीलिंग ऑफ जनरेटिविटी। Talking about the physiological aging at this stage, yes, it becomes more noticeable in comparison to the previous stage. Now this is when a person becomes more realistic about the possibilities and starts recognizing the differences between what is possible and what is likely. So this stage, I would say, is a stage where the person becomes more practical and more realistic. किसी भी पर्सन को ये मिडिल एडल्टहुड स्टेज पे आने के बाद ये पता लग जाता है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाता है कि क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ रियलिस्टिक है। दे स्टार्ट मेकिंग द रियलिस्टिक प्लान्स, दे स्टार्ट मेकिंग द प्लान्स विच आर पॉसिबल टू अचीव। एंड ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, द एडोलेसेंस एज ग्रुप में जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं जो मिडिल एडल्टहुड स्टेज पे होते हैं, ज़्यादातर अगर आप उनसे एडवाइस लेने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, तो उनका सबसे पहला सेंटेंस ही यही होता है कि बी प्रैक्टिकल। ऐसे गोल सेट करो जो बहुत रियलिस्टिक हों। ऐसे गोल सेट करने की कोशिश मत करो जो बहुत दिखने में तो आइडियल हो बट आप उनको अचीव ही नहीं कर पाओ। तो मिडिल एडल्टहुड स्टेज तक आते आते एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाता है, एक रियलिस्टिक पर्सनैलिटी एक पर्सन की बन जाती है। Now this generation can also be called as sandwich generation. Why? Because they have their middle-aged parents at one side and the children on the other side, and they have to take care of both their aging parents as well as their children. That is why the people who belong to middle adulthood stage, they are often termed as the sandwich generation. Now people at this stage are said to undergo midlife crisis also. This is a very important term. Now what does midlife crisis mean? This means that the people here tend to ponder about their hard work and what they have put in various aspects of their both professional and the personal front. यहाँ इस स्टेज में आने के बाद ये एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं लोग कि क्या कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है उस चीज़ का, उस एफर्ट का या उस मेहनत का जो उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में जितनी उन्होंने मेहनत की है, तो क्या उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकल के आया है। ये एक वो स्टेज होती है जहाँ पे उनकी एजिंग विजिबल होने लगती है, उनकी थिंकिंग पैटर्न में और उनकी एनर्जी लेवल्स में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। एंड ऑल्सो दिस इज़ द स्टेज वेयर दे अंडरगो डीप स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। नाउ last but not the least, talking about middle adulthood, this is the period of gaining expertise in certain fields and being able to understand problems and find solution with greater efficiency than before. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे कोई भी पर्सन ये सोचता है कि मैंने आज तक जो मेहनत की, प्रीवियस जो मैंने अपनी स्टेजेस में टाइम इन्वेस्ट किया है, क्या वो फ्रूटफुल था, क्या वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे दे सकता है। तो इस स्टेज तक आते आते कोई भी पर्सन जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व है, उसको करते करते इतना टाइम ड्यूरेशन उसका निकल जाता है कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड का एक एक्सपर्ट बन जाता है, उसको इतना एक्सपीरियंस और इतना एक्सपर्टीज़ हो जाता है उस फील्ड का दैट दे टेंड टू फाइंड सॉल्यूशंस विद ग्रेटर एफिशिएंसी देन बिफोर। इस स्टेज पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या सॉल्यूशंस निकालने की जो एफिशिएंसी होती है वो पीक पर होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस इज द लेट एडल्टहुड स्टेज। नाउ दिस इज अ स्टेज which belongs to the age group of 65 to 85 plus years. Now this stage has been divided into 3 sub stages. The first is young old, in which the people belong to 65 to 74 years of age. The second is old old. Here the 75 to 84 years old people come, and the third one is oldest old. Here the 85 or 85 plus year old people fall under this category. Now in the late adulthood, these are called the senior years, and they are often viewed as a period of poor health, yet many older adults are capable of remaining active and busy.
well into their 80s and 90s. I'm talking about late adulthood. This is a stage in which the people belong to the age group of 65 to 85 years of life or maybe 85 plus. ये एक ऐसी स्टेज होती है which is viewed as a period of poor health. फिर भी कुछ ऐसे older adults होते हैं which are capable of maintaining active and busy life, and they do fairly well in their 80s and 90s also. Now this is a stage where increased health concerns mark the period of development, and in some individuals they may experience mental declines related to dementia also. So aging इस स्टेज पे या तो नॉर्मल हो सकती है या इम्पेयर्ड भी हो सकती है. नॉर्मल एजिंग का मतलब यहाँ पे है कि एक नॉर्मल पैटर्न डेवलपमेंट का जो मोस्टली सब में है, अगर वही पैटर्न फॉलो किसी एक पर्सन की लाइफ में हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल एजिंग. बट अगर फिजिकल चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं और डिसीजेस ज़्यादा हो रही हैं इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल ऑफ द सेम एज, then it is called as impaired aging. Erikson also viewed the elder years as the time of reflection back on life. ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल अपनी पूरी अब तक की लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देता है. Those who are able to look back and see a life well lived, they emerge with a sense of wisdom and readiness to face the end of their lives, while those who look back with regret may be left with the feelings of bitterness and despair. Now this is a very important point to be understood. ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं कि यस हमने मेहनत की और जो हम अचीव करना चाहते थे वो हम अचीव कर चुके हैं, देन उनके अंदर एक सेंस ऑफ विजडम डेवलप हो जाता है एंड दे बिकम रेडी टू फेस द एंड ऑफ देयर लाइफ. बट इन कॉन्ट्रास्ट अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इस लेट एडल्टहुड स्टेज को बिलोंग करते हैं एंड दे डोंट हैव दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो उनके अंदर एक बिटरनेस और एक डिस्पेयर जनरेट हो जाता है एंड समटाइम्स दे मे अंडरगो डिप्रेशन. नाउ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट may work with elderly patients to help them cope with issues related to aging process. यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट दे मे intervene if in case the elderly patients they are not able to cope up with the issues, with the aging issues, with the physical problems, with the mental problems that they have started facing. Then here the role of development psychologists come into play. This stage has been further divided into 3 substages. The first is young old, the second is old and the third is oldest old. I hope the concepts related to the stages of growth and development are clear to you. In my next video, I'll be talking about the stages of cognitive development given by Piaget. So stay tuned and don't forget to hit the bell icon to get the latest notifications about my upcoming videos. Stay safe, stay healthy and never stop learning.